So hello everyone. In the past lecture, we have already seen about what do you mean by binary file, how we are going to perform the operations on binary file like reading operation and writing operations, how we are going to perform the reading and writing operation with respect to your text file. All these things we have already done. Now today we are going to see about the different error handling functions available in C programming. So basically in C programming, the error may occur while writing into a file or reading from a file. Whenever we are working on the file, suppose if you are going to perform reading operations, if you are going to perform writing operations, and during the operations, sometimes error may occur. So when the when the error will occur in the file, so as a programmer, we should know which type of error we are getting while executing a particular program or while performing the reading and writing operations in the file. So there are different types of errors are available, error functions are available. So very first function is F error function. F error, it is one of the error handling functions available in the C programming. The ferror function is used to detect a error while reading or writing a file. It returns a zero if the read or write is successful, and it will return non-zero value in case of failure. So whenever we are going to perform reading or writing operations in a one particular file, at that time, if the error encountered during the file operations, whether it is reading or writing operations, so it will returns a zero when it will get successful in the reading and writing operations. If your operation will get successful, either you are performing a reading operations or writing operations, your operation gets successful, you will get a zero value. You will get a zero value in the return. So ferror function will return the zero if the operation get successful. And if the error may encountered during the file operations, so it will return a non-zero value. It means that your ferror function will return zero when the operation will get successful, and it will return a non-zero value when the error is occur in the file during the file operations. Okay. Now we'll see one simple example as shown on the screen. So first of all, there is one file include over here stdr.h after that integer main. One array is declared character ch of 100. We have declared one file pointer fptr. Here we have declared one file pointer fptr. So after that, we have opened one file fopen info.txt. The mode of the file, opening mode of the file is W, and W stands for writing mode. We are going to open this info.txt file in writing mode. So we are going to open this file info.txt, and it will get connect with the file pointer named as fptr. That means once the info.txt file is get open, it will get connected with the fptr pointer, and that file is open for writing purpose. That's why we have mentioned over here W, and W, it is one of the mode of file opening. So if we place W, it means that the info.txt file will get open for writing purpose. If that file is not exist in the system, it will create the file. If info.txt file is not exist in your system, so it will create the file and open it. But if it is already exists in your system, so it will open directly for writing purpose. Now, next what we will do, fputtest function is used to write something into the file. Like simply puttest function and getest function, we have already learned these two functions. So puttest and getest, these are the two functions are used to print the particular string onto the monitor screen. If similarly, getest function which is used to read something from your
keyboard. That means getS and putS, which is just like a similar of printf and scanf. So putS, which is used to display something on your monitor screen, and getS, which is just like of a scanf. If you want to take something input from the user, we will use a getS function. Similarly, fputS and fgetS, these are the two functions, fputS function and fgetS function, related to your file operations. If you want to write something onto your file, you have to use the fputS function. If you want to read something from the file, you have to use the fgetS function. So here fputS, this function is used to change the position of the file pointer at ptr. Okay, now what we did, we have just written this particular statement into your file. The statement is, this function is used to change the position of file pointer. Just एक one line statement हमने फाइल में लिखा गया है, हम ये फाइल में लिख रहे हैं, जिस कौन सी फाइल में लिखने वाले हैं, जिस फाइल में, जिस पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस fptr में है, एंड fptr विल होल्डिंग द एड्रेस ऑफ info.txt फाइल. हम fptr को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, info.txt फाइल के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. इट मींस दैट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी रिटन इन द फाइल whose address will be held by fptr. Now after that, fsig. So basically what it means, fsig, I have already explained these functions also. Again, in the further slides I have explained in detail. Fsig function, which is used to movement the pointer, to movement the head. That means fsig. Once you read the file, so your cursor will go ahead on forward direction. That means आपका जो cursor है वो आगे आगे बढ़ते सकते हैं. If you are performing the reading operations or writing operations, so हम लोग writing भी करते हैं तो हम लोगों का जो cursor है वो आगे बढ़ते रहता है. If you are performing the reading operations at the same time reading, जो आपका pointer है, जो आपका control है, वो आपका आगे बढ़ते रहता है. It will goes in the forward direction. So what do fsig? What happened if you use the fsig function? When you will use fsig, so fsig will change the position of your file pointer. It means that sometimes your file pointer is on the last location, sometimes it happens it will on the first, it is on the middle one, sometimes it is happened it will be on the beginning. That means it will be on the first position. So wherever your pointer is there, you can do the movement of that pointer in the forward direction or in the reverse direction. It means that suppose if you open the file and if your file pointer is suppose here, suppose your file pointer is here, suppose यहाँ पे आपका file pointer है. If you want to move this file pointer either in that backward direction or in the forward direction, that means उस file pointer को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं and we can get into the reverse, that means backward direction. That means file pointer in the sense that means control. ठीक है, that means reading और writing control जिसे हम लोग बोलेंगे. You can move the heads, that means in upward direction or in the downward, that means backward और forward direction में आप अपने जो अपना आपका pointer है, that means जो आपका head है, reading writing head है, उसको आप लोग movement कर सकते हैं. ठीक है, that means movement कर सकते हैं. that means suppose यहाँ पे currently आपका pointer है, if you want to आपको back जाना है, ठीक है, so back जाने के लिए आप negative value यूज करते हो, आगे जाने के लिए आप forward, that means आप positive value यूज करते हो. Suppose अगर आप यहाँ 0th पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल 0 पे, इट मींस दैट इट इज यू आर ऑन द बिगिनिंग पोजीशन. आप लास्ट पोजीशन पे है, दैट मींस आप समवेयर एल्स, दैट मींस आप सपोज 28 बाइट पे हो आप. ठीक है, दैट मींस आपने एक लाइन पूरा रीड कर दिया, आपका पॉइंटर यहाँ पे कहीं तो भी है. ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंटर पोजीशन से आपको पोजीशन चेंज करना है, आपको आगे जाना है या पीछे जाना है. दैट मींस इफ यू वांट टू मूव अ backward direct, move in a backward position, or you have to go in a forward direction. So for that we will use a sig pointer, fsig. Fsig is a function which is used to move a position of your pointer either in backward or either in forward direction. So we require the 3 parameters. We will see later on how that particular functions will exactly work. Okay, it will require the 3 parameters. One is a file pointer, another is a displacement, that means positions, आपको forward जाना है या backward जाना है, and after that the last parameter is of, that means the current positions of the pointer. Okay, likewise, so suppose fsig fptr 5,0, here we have written fsig fptr 5,0. in the previous one what fput से क्या किया आपने, ये particular statement this function is used, ये जो लिखा है आपने, ये आपने एक फाइल में राइट कर दिया. after that fsig fptr 5,0, इट मींस दैट ये जो फाइल पॉइंटर्स जो भी है आपका,
ठीक है, आपका पॉइंटर सपोज बिगिनिंग पोजीशन पे, दैट मींस इट इज ऑफ द 0th पोजीशन, यू वांट टू मूव 5 लोकेशंस अहेड, आपको 5 कैरेक्टर छोड़ के आगे बढ़ना है। सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, यानी जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। दैट मींस करंट पोजीशन जो आपके पर्टिकुलर पोजीशन जो है आपके रीडिंग राइटिंग लीड्स का, वो सपोज 0 पे, 0 से आपको 5 कैरेक्टर आगे छोड़ के आगे बढ़ना है। दैट मींस सपोज यहाँ पे ये आपका 0 है, मान के चलते हैं ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, यहां से मुझे 5 कैरेक्टर छोड़ के आगे बढ़ना है। दैट मींस 1 2 3 4 एंड 5, इतना छोड़ के मुझे मेरा ये कंट्रोल यहां पे शिफ्ट करना है, यहां पे शिफ्ट करना है, ठीक है, 5 कैरेक्टर छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है। दैट मींस आई वांट टू शिफ्ट ओवर हियर, दैट मींस मुझे H से रीडिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। दैट मींस F6 से फिर मैंने क्या किया, मैंने 0 जहां पे मेरा पॉइंटर था वहां से मैंने उसको आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया, 5 कैरेक्टर मैंने आगे बढ़ाया, 5th लोकेशन मैंने आगे बढ़ाया हुआ है। दैट मींस 5 कैरेक्टर छोड़ के मुझे रीडिंग स्टार्ट करना है। दैट मींस 5 लोकेशन छोड़ के, दैट मींस 5 कैरेक्टर छोड़ के मुझे मेरा जो पॉइंटर हेड है उसको मूव करना है। दैट मींस F6, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया कि 5 कैरेक्टर छोड़ के हमने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दिया। आफ्टर दैट F get s ch 50, F पॉइंटर। So now F get s, so F get s से क्या होगा, what we will do now here, we will read the data from the file। F put s से हमने क्या किया, डेटा हमने राइट किया फाइल में, ठीक है, F put s से हमने डेटा राइट किया फाइल में। F get s से हमने क्या किया, डेटा रीड किया फाइल से, ठीक है। देखिए डोंट बी कंफ्यूज, यहां से हमने क्या किया कि ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये हमने फाइल में राइट कर दिया। राइट करने के बाद हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर F6 से क्या किया कि जहां पे हमारा पॉइंटर है दैट मींस 0th पोजीशन से पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ाया 5 लोकेशन, ठीक है। उसके बाद दैट मींस 5th कैरेक्टर छोड़ के वो रीडिंग स्टार्ट करेगा। सो F get s से क्या करेगा, हम लोग फाइल से डेटा रीड करेंगे। अभी रीड कहां से करेंगे, रीड 50 नंबर ऑफ, दैट मींस 5th नंबर से, दैट मींस आपका 0 पे पॉइंटर था, 0 से आप 5 लोकेशन आगे बढ़े, वहां से आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, वहां से आप रीडिंग स्टार्ट करोगे। तो जो भी कैरेक्टर है, जो भी डेटा आप रीड करोगे वो आपका फाइल का डेटा रीड होके कहां पे आएगा, फाइल का डेटा रीड होके आपके प्रोग्राम के पास आएगा। आफ्टर दैट if f error f pointer, then we have to check whether it is error, that means we have to check f error। So f error function, it will return a non-zero value। See, the f error function is used to detect error while reading or writing the file. It returns a 0 if the reading or writing operation gets successful। So it means that if f error function, it will return a 0 when the function, that means when the operation will get successful। अगर आपका operation successful हो जाता है, either it is reading हो writing हो, so it will return 0। अगर वो 0 रिटर्न नहीं कर रहा है, it means that there is a something error occur during the file operation। It means that we have to check if f error, with the f error we are going to pass the one parameter and that is nothing but a file pointer। So f error f pointer किससे कनेक्ट है, f pointer info.txt से कनेक्ट है। जब ये f pointer ये ड्यूरिंग द ऑपरेशंस अगर कुछ एरर आता है, ठीक है, सो इट विल रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू, but if it will return 0, it means that your operation will get successful, ठीक है। if you will get a zero value, that means operation आपका successful हो जाएगा। if you will get the non zero value, it means that you will get a message error, the reading file is not allowed in the writing mode। but obvious, देखिए, now see what happened, you have opened the file in writing mode, you have opened the file in writing mode। that means writing mode means you have opened the info.txt file in writing mode, that means you are going to write something into the file। from this particular point f put से आपने फाइल में राइट किया, that is okay, चलेगा। but from f get s, what you are going to do, you are going to read something from the file, and here this file is open in writing mode, so you are going to write something into the file। it is not possible to read from the file, but what happened, you have used f get s function, and f get s function is used to read something from the file। एफ गेटर से क्या होगा कि हम लोग फाइल से डेटा रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रीड कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये फंक्शन का जो काम है ये रीडिंग का है, और ये फाइल मैंने राइटिंग मोड में ओपन करके रखा है, तो इसमें सिर्फ हम लोग राइटिंग करेंगे, हम लोग इसमें रीड नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई
यहाँ पे जब एफ एरर फंक्शन जो आपने यूज किया है, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इट विल गेट अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू जब आएगा तो इट विल प्रिंट अ मैसेज एरर, रीडिंग फाइल इज नॉट अलाउड इन द राइटिंग मोड। दैट मीन्स आपने फाइल जो ओपन किया हुआ है वो राइटिंग मोड में ओपन किया है, आप डेटा रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपको मैसेज डिस्प्ले होगा, सो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, रीडिंग फाइल इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, आफ्टर दैट फाइल को आपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, दैट मीन्स एफ एरर फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न अ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो वैल्यू, इट विल रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू इफ द एरर एनकाउंटर्ड, इट विल रिटर्न जीरो वैल्यू इफ द ऑपरेशन गेट सक्सेसफुल। So this is a f error function. Now the another function is p error function. There are two types of error: the error which is occurred during the file operations, and that error will be encountered due to the mistakes of the developer or due to the mistakes of the programmer. But p error, that means that p error function is used to display the error which are specified by the compiler. So basically what it means a p error. For example, suppose एक कोई फाइल है, आपने उसको ओपन किया है, ठीक है, if you are going to open the particular file in reading mode, but that file is not exist in the system, the compiler will find whether that file is exist in your system or not. Compiler क्या करेगा, वो फाइल को ढूंढेगा, it will find out whether that the file is exist in your system or not. That file is not existing in your system, so your compiler throw the error. That is what you are going to do, you are going to open the file which is not exist in the system. आप ऐसी फाइल ओपन कर रहे हो जो फाइल आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे फाइल को जब हम लोग ओपन करने की कोशिश करेंगे, so that file is not going to open. So at that time, your p error, that is at that time your compiler will throw the errors. So p error functions is used to display the error which are specified by the compiler. So one simple example is given here. So character ch100 का array लिया हुआ है of character type. After that एक फाइल पॉइंटर बनाया हुआ है fptr नाम का, with the type is file, that means एक फाइल पॉइंटर बनाया हुआ है. After that we are open one file info1.txt. We are going to open one file info1.txt in reading mode. There is r, and r stands for we are going to open the file in reading mode, and once the file is open it will get connected with the fptr. fptr के साथ हमने फाइल को कनेक्ट कर दिया. fptr is having the address of file known as info1.txt. So we have to check if fptr is equal to null. If fptr is equal to null, अगर fptr null आता है, it means that that file is having some error during when that particular file is open. That means if you will get fptr is equal to null, that means there is an error while opening the file. So we have to check. That means p error, what the p error will display, p error will display the particular message. That means suppose if there is a message for text file, that means फॉक टेक्स्ट फाइल, that means the file is not going to open, there's just एक one message हमने टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है, so it will print the फॉक टेक्स्ट फाइल. so देखिए आपका नीचे आउटपुट लिखा हुआ है फॉक टेक्स्ट फाइल. ठीक है, ये कुलॉन देके यहाँ पे आगे में क्या प्रिंट करेगा, नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी. दैट मीन्स द पी एरर विल प्रिंट वन मैसेज once you open the particular file, that file is not open, so it will print a message no such a file or directory. सो ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, आपने पी एरर के साथ जो भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसे फोक टेक्स्ट फाइल, सो इट विल प्रिंट फोक टेक्स्ट फाइल एज इट इज. बाद में कुलॉन देगा, कुलॉन देने के बाद इट विल प्रिंट नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी. दैट मींस यू आर गोइंग टू ओपन द फाइल info1.txt इन अ रीडिंग पर्पस, but that file is not exist in your system. So p error, हमने p error functions use किया. p error functions will display one text message, after that it will print a colon के बाद वो एक message display करेगा no such a file or directories are present. Got it? So आपका जो previous, that means आपका f error functions, ठीक है, it will gives a error when the particular file, it will gives a error or it will returns a zero when the operations will get successful, that is reading operation or writing operation. It will return a non-zero value once the failure occur. Okay, and that failure will be done by the or it is a mistake of the programmer or the developer. But in case of a p error, it is a whatever file you are going to open, that file is not exist in the system. That means your compiler throw the error, your compiler show the error that file is not exist, and you're going to open that file.
जो फाइल ही प्रेजेंट नहीं है उस फाइल पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, सो इट इज नॉट हैपन, इट मींस इट विल थ्रो द एरर. Now these are the two errors, P error and F error. Now we will see the low level disk IO. It is one of the topic of file handling. That is C low level disk IO. So low level, there are low level disk IO and high level disk IO. So low level disk IO क्या होता है, high level disk IO यानी क्या होता है, ठीक है. So if you're talking about the high level disk IO, we have already studied about fprintf and fscanf functions. We have already seen printf and scan. That is console IO, that is printf and scanf. Suppose if you want to read the data from the keyboard through the user, so that means we are going to use a scanf. If you want to print on monitor screen, you have to use a printf. Now fprintf and fscanf. Suppose if you want to write something into the file, you will use fprintf. Suppose if you want to read something from the file, you have to use a fscanf. So these two functions are the high level IO function. Why it is a high level IO functions? Because whenever you are performing the operations between, or whenever you are doing the communication between your file and your program, in between that we will use a buffer. We will use a buffer. Okay, buffer is a well-known term in a regular daily routine examples. Always we are saying buffer. So buffer means what? Suppose if you want to move a data from one place to another, एक डेटा मुझे भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर मूव करना है. जब डेटा का मूवमेंट होता है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली पिक अप द डेटा एंड ड्रॉप द डेटा समवेयर एल्स. ले लिया डेटा और हमने भेज दिया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है. So whenever we want to move the data from one place to another, in between we require the buffer. So buffer is a physical memory storage space in which we are going to store the data temporarily. That means जब डेटा का मूवमेंट होता है तो डेटा हम लोग जब डेटा हम लोग पिक करते हैं तो उसको हम लोग एक बफर में स्टोर करते हैं, और बफर से वो डेटा का क्या होता है, मूवमेंट होता है, बाइट बाय बाइट वो डेटा मूव करता है एट द डेस्टिनेशन प्लेस. सो जब हम लोग हाई लेवल की बात करते हैं, जब हम लोग कोई स्ट्रीम को पास करते हैं, ठीक है, कोई जब हम लोग स्ट्रीम में कोई स्टेटमेंट आपको लिखना है, वो स्टेटमेंट को जब हम लोग भेजते हैं, सो इट विल गोज बाइट बाय बाइट. ठीक है, सो जब बाइट बाय बाइट जाता है तो बीच में एक बफर लगता है, तो डेटा जब पास होगा तो पहले बफर में जाता है, बफर से डेटा उसके डेस्टिनेशन पे जाता है. जब हम लोग हाई लेवल की बात करते हैं तो इन हाई लेवल आयो वी कैन यूज अ बफर. In buffer we will store the data temporarily and after that we will move the data byte by byte. But in case of a low level disk IO, we will not use any concept of buffer over here. सो लो लेवल डिस्क आईओ में जो फंक्शंस है या फिर जो हम लोग लो लेवल आईओ डिस्क इनपुट आउटपुट के लिए रिलेटेड जो फंक्शंस यूज करेंगे, इन हियर we are not going to use a buffer. So the low level file IO is nothing but the data is read or write to the file directly without the need of buffer. There is no necessity of buffer. Without using the buffer, we are going to perform a reading and writing operation. The low level file IO function use handles, so the data transfer speed is faster than high level IO functions. We are not using a buffer, so that data transfer rate is more. We can increase the movement of data. That means we can increase the processing of data of movement. That means suppose if you want to move the data from A disk to B disk, we can easily move the data from one file to another file. We can easily move the data with the help of low level disk IO functions. So the following low level IO functions are defined in IO.h header file, like stdio.h, conio.h, string.h. We are having IO.h header file in which low level disk IO functions are available. Like printf scanfs are available in stdio.h file. Similarly, we are having low disk IO functions are available in the IO.h header file. If you are using these functions in your program, so you need to include #include IO.h header file. After that, so one of the function, that is open function. Open function, it is one of the functions of low level disk IO. The open function
The open function is used to open a file. There are several modes to open a file. Suppose if you want to perform certain types of operations on a file using low level disk IO. So under the low level disk IO, we are having one open function. So whenever you want to perform the operation on file, so first of all, you need to open that file, whether it is reading operations, writing operations, appending operations, and so on. कोई भी operations हो, तो you need to first of all open that particular file. So here is also open function, just like of fopen. Okay, fopen function is also available in stdio.h file. So fopen function क्या करता है, particular file को open करता है, and it will connect that particular file with the particular file pointer. So same thing happened over here also. We will having an open function. So the open function is used to open a file for different operation. So there are different modes while opening the file. Just like of fopen से आप कोई अगर file को open करते, we are having reading mode, writing mode, reading writing mode, and अगर binary file है तो आप लिखते हो RB plus RB, that means WB plus likewise. So different आपके modes होते हैं, ठीक है? So just like of different modes available for the fopen, so different modes are also available for open functions in low level disk IO function. So the syntax for open function is just you have to write an open, after that give a file name, comma, mode of the file. That means you have to give a file name on which file you have you have to perform some certain types of operations, or we can say which type of files you want to open. Okay, so you have to provide a name of the file, after that mode, in which mode you are going to open the file. So suppose if you are writing, instead of mode, if you are writing o underscore create, o underscore create, if you're writing o underscore create, it means that open a new file for writing purpose. If you write o underscore create, it means that open a new file for writing. If you write o underscore wr only, so it means that you have to open a file in writing mode only. WR means writing only. Similarly, RD only, that means open a file in read only mode. If you write RDWR, that is O underscore RDWR, it means that you have to open a file in read and writing mode. Suppose if you write O underscore append, it means that you have to open a file for appending mode. That means if you want to add some content, so you have to use the O underscore append. After that, if you write O underscore binary, it means that open a file in binary mode. That means you are going to open the file in binary mode. After that, if you write O underscore text, that means you are going to create a text file. If you write O underscore truncate, so you have to open a file for truncate. That means if you want to truncate the content of that particular file, so for that you have to use a O underscore truncate. So these are the different modes. These are the different modes of the file you have to use here. After that file name, you have to use the mode of this file. So that means in this particular mode, you are going to open the file for a different operations. After that, another functions present in low level IO. The another function is write function. जैसे open function है, वैसे यहाँ पे write function है, ठीक है? So the write function is which is used to write a data into the file. If you want to read the data into a file using low level IO function, so write function, WRIT, write is a function which is used to write the content or write the data to the particular file. So syntax of the write function is integer handle, comma void buffer, after that insign and byte. जैसे आपको कोई डेटा सिंपली हमने fopen functions we have already studied about the fopen functions. So while reading the data to the file, we will use fprintf. Fprintf statement we will use to write something onto the file. So fprintf हम जब यूज करते थे, so first of all you need to provide the file pointer. जो फाइल पॉइंटर में जो फाइल पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस रहता है, एक पर्टिकुलर फाइल जो आपने ओपन किया है. Same thing happened over here also. Suppose if you want to write some data onto the file, you need to provide the one handle. So basically handle is nothing but just a pointer. आपके फाइल का पॉइंटर होता है, ठीक है? That means it represent कि आपको डेटा कहां पे राइट करना है, ठीक है? आफ्टर दैट void buffer, that means डेटा आपको कहां से उठाना है.
दैट मीन्स डेटा आपको कहाँ से लेना है, दैट मीन्स वेयर बफर इज द डेटा एरिया जहां पे आपका ये डेटा स्टोर रहेगा. आफ्टर दैट अनसाइंड एंड बाइट. सो एन बाइट्स का मतलब हो रहा है इट रेफर्ड एज अ नंबर ऑफ बाइट्स, कितने अमाउंट ऑफ डेटा को आपको आपके फाइल में राइट करना है. सो दैट मीन्स यू नीड टू पास थ्री पैरामीटर. वन इज इंटीजर टाइप ऑफ एक वेरिएबल आपका रहेगा, ठीक है. आफ्टर दैट void star buffer, that means it is the area where your data is present. After that unsigned and byte, it means that the third parameter is nothing but the amount of data you want to write into the file. So we have to use a write function for writing operations. Similarly, we are having the read function. We are having the read functions under the low level IO functions. So read function which is used to read the data from the file. जैसे आपका हाई लेवल आईओ फंक्शन है उसमें से हम लोग एफ स्कैनफ यूज करते हैं. अगर फाइल से डेटा रीड करना है तो हम लोग एफ स्कैनफ यूज करते हैं. वैसे अगर आपका लो लेवल फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं तो लो लेवल फंक्शंस का यूज करके अगर आपको डेटा रीड करना है तो आपके पास रीड फंक्शंस है, आर ई ए डी रीड फंक्शंस है, विच इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. So again, having three parameters, that is read integer one of the handle, that means integer handle, that means one of the variable. After that buffer size, that means where is your actually data is there. After that n byte, that means how much data you want to read from the file. So likewise, read and write operations we will be performed using write functions and the reading functions. Once you finish the operations, once your operations will get done, सो यू नीड टू क्लोज द फाइल. सो जो भी फाइल आपने ओपन किया उस फाइल को आपको क्लोज करना होता है. सो देयर इज एन क्लोज फंक्शन. जैसे आपका नॉर्मल में हाई लेवल फंक्शंस जो होते हैं उसमें एफ क्लोज नाम का फंक्शन है. एफ क्लोज इज यूज टू क्लोज द ओपन फाइल. जो भी आपने फाइल ओपन किया उसको क्लोज करने के लिए हम लोग एफ क्लोज यूज करते हैं. लेकिन लो लेवल में एक क्लोज नाम का सिंपल क्लोज नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है. सो दैट सिंपल क्लोज नाम का फंक्शन जो यूज करते हैं हम लोग फाइल को, जो भी फाइल हमने ओपन किया उसको क्लोज करने के लिए. सो क्लोज के साथ हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल पास करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस होता है. सो दैट पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल जो है दैट मीन्स ये इसमें जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है. तो उस वैल्यू पे जो भी आपका एक फाइल जो ओपन हुआ है उससे जो कनेक्ट हुआ है वो फाइल को हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज करते हैं. सो क्लोज फंक्शन विच इज यूज टू क्लोज द ओपन फाइल. सो hope you all are understood about this file handling, low level IO functions and error handling functions in C programming. Okay, so thank you one and all. Thank you.